good healthcare facilities by the specialized doctors to the peoples living in the region. Right. Yes. While having the more facilities of telemedicine, there are some critical issues while implementing the telemedicines. What are the critical issues? Many times there might be issue that the informations transmitted may be interrupted, proper communication is not there, maintaining the privacy and confidentiality of the patient, protection of the information and computer system is a top priority, right? Training to the technical staff who is handling the uh, computer system or ICT systems, developing process of reimbursement of the service provided by telemedicine. Nowadays there is many of the people have health insurance, right? So it should be covered by the telemedicine. Currently it is not covered in health insurance, but it should be covered. It's an issue of telemedicine that is not covered by any insurance policies, right? Technical staff is required, high speed internet is required, IT personnel is required. Yes, the time consuming process is there. As training to the technical staff is to be given, setting up of the medical equipments, professional knowledge, interpersonal skill, documentation should be there. Then practice and administrative issues are there. And extra times required for telemedicine setup for medical equipments, management, transmission of prescription, and everything. Right. It how in India telemedicine works. Now there are some practical guidelines, telemedicine practice guidelines proposed by MCI, Medical Council of India, and for what? For RPM, means registered medical practitioner, has to who is enrolled in the state medical register or under Indian Medical Council, has to go through these guidelines for using the telemedicine concept. Any doctor, if consulting a patient via telemedicine, has to follow the guidelines which has been given by the Medical Council of India, right? तो उसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं. अब तो गाइडलाइंस का बोल दिया कि भैया आपको ये ट्रेनिंग लेनी है, उनको कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. Before going to consultation via telemedicine, the registered medical practitioner has to take training courses, online courses available for telemedicine, given by Medical Council of India, right? There are exceptions also. For surgicals and invasive procedures, telemedicine cannot be used. वो डॉक्टर को प्रेजेंट ही रहना पड़ेगा वहाँ पे सर्जिकल के लिए, तो वाया टेलीमेडिसिन इट इज नॉट पॉसिबल. There is a no provision for consultation outside the jurisdiction of India. इंडिया के बाहर वाया टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी के लिए कोई अभी प्रोविजन अपने MCI ने दिया हुआ अभी नहीं है, राइट? तो अपने मेडिकल्स के लिए पहले कौन से टूल्स रहेंगे पहले तो वी ऑल नो व्हाट विल बी द टूल्स ऑफ टेलीमेडिसिन. Each and every information and technologies will be used in the telemedicine, such as landline phones, WhatsApp, Facebook, Messenger. There should be LAN and WAN internet connections, mobile phones, Skypes, etc. etc. अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से, मतलब RPM डॉक्टर से बात कर रहा है तो शायद एक कॉल पे बात हो सकती है कि सर ये पेशेंट में ऐसी दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है, हम कैसे कहते हैं, दैट कैन बी डन ऑन द फोन कॉल, राइट? अब पेशेंट कुछ क्रिटिकल हुआ तो पेशेंट के रिलेटिव वीडियो कॉल करेंगे डॉक्टर को, तो कौन सा मोड यूज करना है उनको कैसे पता चलेगा? इट शुड बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक टाइप्स. मोड ऑफ कम्युनिकेशन, which mode of the communication should be selected at particular time, टाइमिंग्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, कितने टाइम में इंफॉर्मेशन हो जानी है, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट हो, अब डॉक्टर बात करे, पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है तो शॉर्ट टाइम में अपने क्रिटिकलिज्म डॉक्टर को ट्रांसफर करनी पड़ेगी. सर ये हो रहा है अभी अर्जेंट में, क्या करूँ? पर्पस ऑफ द कंसल्टेशन, आप किसके लिए कौन से पर्पस से बात कर रहे हो, इंटरेक्शन किसके बीच में हो रही है, डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर्स टू पेशेंट और केयर टेकर, right? That should be taken into mind. There are some elements. These are the 4 basic classification. Means we also should consider these elements also, such as context. Context should be appropriate and adequate while communicating
for the telemedicine through any RPM or a patient. Telemedicine should identify who is the RPM and patient. The mode of the communication we have taken. Consent. Yes, consent is an important part. Every practitioner, every doctor has to take consent from the patient to treat them. It should be implied or explied. Implied can be for the normal consultation for fever or hypertension or diabetic and all. But if there is any extra consultation, then doctors has to take consent from the patient through email, text, audio, video message. Anything can be received from the patient for taking the consent of the patient. Then types of communication. What are the types of communication? Sorry, types of consultation. Sorry. There are two types of consultation. First, we know first consultation and follow-up consultation. First consultations are that for the first time, patient is meeting for the first time for the current health condition, or as he has consulted more than 6 months, then also the patient will be considered as a first consultation. Patient has consulted the doctors, but for the another disease, and now he is consulting for the another disease. Then also the patient will be considered as a first consultation of the patient only. And follow up after the consultation of first to the doctors, there will be follow up previous inpatient conditions would be follow up for after 5 days or 10 days as per the prescribed by the doctors. Yes. Then patient management. Doctors has to know each and every condition of the patient first from the tools of the telemedicines. Then should give a professional judgment on it, and then should give prescription, should be known as e-prescription through the modes of telemedicine. Right. There are restrictions of prescribing medicines through telemedicines also. It has been listed as list O, list A, list B, and prohibited list. List O is a safe to be prescribed in any mode of the communication, any mode of the consultation or telemedicine. List A is relatively safe medicine prescribed for the first consultation and can be repeated in follow-up consultation. Then there is a list B, which is described to patient who is undergoing only follow-up consultation, which is not prescribed in the first consultation and is prescribed in only follow-up consultation. It is categorized in list B. And there are prohibited lists. It's high potential of abuse of drugs and cosmetics. As per the Drugs and Cosmetic Act, Schedule X describe that list. Narcotic drugs, such as narcotic drugs, it should be not prescribed through telemedicine. Yes. Yeah. Then, yes. Yes, as I told, in COVID pandemic, telemedicine services is widely spread in India, particularly in India and outside the world also. Right. What are the benefits of the telemedicine which is spread in the COVID-19 period only? It delivers the clinical information to healthcare professional, regardless patient is located, where the patient is located. It reduces travel expense, it saves times, reduce medical cost. The patient easily approaches the consultant doctor at any point of the time. It can be used for ongoing management of asthma, hypertension, diabetes, etc. It also gives the psychological support to the patient and their family members in the COVID pandemic through phones or teleconference and other means of communication. Right. It helps in reducing on burdens on the tertiary care, as on the phone only the doctor prescribes the medicines, routine medicines, and the patient is getting the medicines by on call only. So it reduces the burden on the tertiary care. It helps in providing training to the care providers of the sick and disabled children. For the sick and disabled children's patient, parents saw that the caretaker has to visit the doctors and make a consultation over there. But in pandemic, there are chances for infection also. So through telemedicine, the chances of infection has been removed, and caretaker or the parents can
provide have training how to take care of their disabled children through telemedicine and can consult on telemedicine also, right? And there are some basic benefits: easy access to specialist. Patients can easily access the specialist doctors on call, and reduce exposed to pathogens. There no needs to go to laboratories for the reports. Pathogen can visit your home and take your samples, right? Support for people with chronic condition, online psychological support, psychiatric support, psychological support, reduce NXE used on ongoing treatments, minimizing risk of healthcare workers. Yes. Mm, COVID was a scenario. It is passed by the in passed through air or through touch and everything. So there are chances of healthcare workers to have COVID also. So it minimizes the risk of healthcare workers also. If patient is not visiting the hospital, teleconsultation is there. It minimizes the risk of healthcare workers. Right. Second one is health insurance. Uh, we all know the maximum people will have the health insurance policies of themselves or with the family. हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों हुआ? हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों हुआ? क्योंकि it reduces the burden of the medical cost when it's occurs due to the any hospitalization or surgical procedure, right? Health insurance क्या है? Health insurance is an agreement made with an insurer to have them pay for the sum or all of your medical expenses in exchange for a premium. वो हर साल आपसे एक प्रीमियम वसूल करता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, and he will give guarantee or make an agreement with you to pay your medical bills at the time when you need it, right? Having health insurance can keep you from incurring medical bills you cannot afford to pay out of the pocket. उस टाइम ज्यादा बिल आ गया, 2 लाख आ गया, 2 लाख रुपए पॉकेट में पड़े नहीं, कैसे करेंगे? अगर मेडिकल इंश्योरेंस है आपके पास तो यू कैन गेट अ हेल्प फ्रॉम ओवर इट, राइट? From last 70 years, India has achieved a lot in the terms of health improvement, but still India is way behind from the fast developing countries such as China, Sri Lanka, Vietnam, etc., etc. In health insurance, many of the private sector bridges most gap between the government offers and the people's need. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी क्यों आई पिक्चर में? क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योरेंस लो बजट में था. आपने जब मेडिक्लेम लिया तो पैसा काट देते थे, प्रीमियम अपने टाइम पे नहीं भरा तो पॉलिसी नेक्स्ट डे रिजेक्ट हो जाती थी, कैंसिल हो जाती थी. तो प्राइवेट सेक्टर आए, दे चार्जेस मोर प्रीमियम्स, गिव यू मोर बेनिफिट्स, such as they give you daily cash encashment also. If you are staying in hospital for 5 days, they will give you 1,000 rupees per day as a daily cash limit. Today it is private companies used to do so. Which are the government companies who was working in this health insurance sector? And New India, United India, Oriental, and National Insurance. There are 4 companies which are giving health insurance product in India to the population of India, right? There are 4 modes of, let's go to another slide. There are 4 modes of health insurance. Number 1, PHI, private health insurance. Second, community based health insurance, social health insurance, and fourth is tax based system. Private health insurance, there are many companies who gives health insurance to the people, which is in developed and developing countries also, right? It is becoming more prevalent in developing countries than in developed countries. Some statistics states that out of 154 developing countries, only 11 funds, only in 11 countries, population funds more than 10% of the population funds more than in more of their health through private health insurance. Maximum people take government policies. Now PHI, private health insurance, can increase financial protection and access to quality health care, right? It is a appropriate option for those who can pay high premiums,
who are affordables, right? For middle class, higher middle class, and upper class. Private health insurance is good, but it is not appropriate financial option for poor people, sick people cannot afford risk-related premiums. It's not a good option for private health insurance. Second is community-based health insurance. Uh, in many regions, in many rural areas, in some lower backward areas, there is no facility of health insurance. तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस डेवलप करती है on the basis of the income of the community. They collect funds from their community peoples, right? On the basis of their fund, they give medical some amount of medical bills to their community peoples. A variety of community-based health financing arrangement have emerged over last past decades, including community health funds, community health organization, micro insurance, revolving trust funds, etc. तो वो सिर्फ उन कम्युनिटी के लिए कर रहा है. अगर उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें मेडिक्लेम नहीं लिया हुआ है, उनका बिल 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, then that community will support that person by giving some amount of funds on their medical bills, right? नाउ कम सोशल हेल्थ इंश्योरेंस. ये स्कीम क्या हो गई, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, कॉर्पोरेट कंपनीज है या फिर सम बिग 4 कंपनीज है, दे प्रोवाइड देयर एम्प्लॉइज अ हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग इन देयर सैलरीज ओनली. वो लोग प्रीमियम उनकी सैलरी से काटते हैं, दे डिडक्ट प्रीमियम फ्रॉम देयर सैलरी and provide some mediclaim facility to their employees, right? ये भी कौन से पे बेस्ड हो गया कि जो प्रीमियम पे कर सकते हैं, who are affordable, who have good income and ready to pay premiums from their salary, right? They can be included in social health insurance scheme. These are entitled for the affordable members only, right? In this social health insurance, premiums are charged at flat rate, right? No, that for age category wise premiums होते हैं कि अगर एज ज्यादा हो गई तो आपका इतना प्रीमियम ज्यादा लगेगा, एज कम है तो प्रीमियम कम होगा. पर इसके अंदर कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर फ्लैट रेट से प्रीमियम वो लोग चार्ज करते हैं कॉर्पोरेट को, राइट? और इसके अंदर एक्सेम्पशंस भी होते हैं कि भाई वो लोग एल्डर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ एम्प्लॉइज को ही बेनिफिट देंगे. कोई कॉर्पोरेट कंपनीज अपने सारे फैमिली मेंबर्स को भी कवर करवाती है कि एम्प्लॉइज है, उनके फादर मदर भी कवर होंगे, वाइफ भी कवर होगी. इट डिपेंड्स ऑन कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट. नेक्स्ट इज टैक्स बेस्ड सिस्टम. अब टैक्स बेस्ड सिस्टम क्या है, हम जो इनकम टैक्स भर रहे हैं उसी बेस से गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाती है. नाउअडेज इट्स माय योजना इन गुजरात, बट नाउअडेज इट्स बीन चेंज्ड आयुष्मान भारत, PMJAY. तो हम जो टैक्स भर रहे हैं उसी टैक्स से गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई, प्लान बनाया. वो प्लान से वो पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, उनको वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? दैट्स कवर्ड इन टैक्स बेस्ड सिस्टम. अब इंश्योरेंस कंपनी वर्क कैसे करती है? जो आया ये टैक्स बेस्ड सिस्टम हो गया, वो तो गवर्नमेंट वर्क कर रहा है. सोशल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसका भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट्स का टाई अप होगा, वो भी इंश्योरेंस कंपनी वर्क कर रहे हैं. एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक उनकी कमेटी बनी होती है, वो कमेटी वर्क कर रही है. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्लेम्स दे रही है. हाउ इट विल वर्क? इंश्योरेंस कंपनी इज वर्किंग थ्रू TPAs, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स. होल वर्किंग विल बी डन बाय दिस TPAs. जब पेशेंट एडमिट होता है तो TPA जाएगी चेक करने के लिए पेशेंट एडमिट हुआ, कौन से रूम में एडमिट हुआ, क्या चार्ज लिया हुआ है, आपने जो इंटीमेट किया वो सच है कि नहीं है. डिस्चार्ज होने के बाद फिर से जाएगी, बिल बताओ आपका कितने दिन का स्टे किया है, इतना बिल रखा हुआ है, इंडोर केस पेपर क्या है, वो सब TPA चेक करेगा. वंस द TPA विल चेक इट and then make a report, it will be sent to insurance company and insurance company will make payment, right?
Now, what are the roles of regulators in India? Who is the regulator of this health insurance? This IRDA, right? Insurance Regulatory and Development Authority. It is a statutory body for regulation for the whole insurance industry. It grants licensing to the private companies who is regulating the insurance business, right? And it's ensure that the sector develops rapidly and the benefits of insurance goes to the customer directly, right? मेनली IRDA तीन काम कर रही है. फर्स्ट, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज है, राइट, वो उनके प्रीमियम्स हाई होते हैं, तो मिडिल क्लास या अपर क्लास ही उनको अफोर्ड कर पाएगा, राइट. वो प्रीमियम्स में, वो सिचुएशन में वो देखती है कि अनरेगुलेटेड रीइंबर्समेंट तो नहीं हो रहा है ना. कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं and doctors are practicing that they create a dummy file of the patient and the patient keeps into the reimbursement in insurance company, which is totally wrong. So it's the main work of the insurance IRDA to see that the unregulated reimbursement is being not carried by the insurance company or by the registered medical practitioner. सेकेंड वन, वो भी देखती है जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, जो ओनली फोकस रीच और अपर क्लास के लिए कर रहे हैं, वो ऐसी भी प्रोडक्ट्स डेवलप करे जो पुअर सेगमेंट के लिए होनी चाहिए, मतलब लेस प्रीमियम वाली, उसको अच्छा थोड़ा प्रीमियम कम हो, उसका अच्छे से सम इंश्योर्ड कवर हो, सारी सर्जिकल प्रोसीजर, मेडिकल मैनेजमेंट सब कवर हो, ऐसी स्कीम वो डेवलप करे, वो भी वो देखता है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, राइट. और इसके अंदर मेन लीड लिया हुआ गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी में. गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम कम होता है पर उनका को पेमेंट ज्यादा होता है, उनके फिक्स होते हैं 10%, 20%, 30%. दे डिडक्ट 30% ऑफ द हॉस्पिटल बिल्स फ्रॉम योर होल हॉस्पिटल बिल्स एट द टाइम ऑफ द रीइंबर्समेंट ऑफ कैशलेस फैसिलिटीज. और थर्ड काम उसका वो है कि वो एनकरेज करता है एनजीओ को, कोऑपरेटिव्स को एंड अदर सच ऑर्गेनाइजेशन कि वो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर हो और डेवलप करे प्रोडक्ट्स पुअर के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए. सो सारे पॉपुलेशन को, हर एक पर्सन को वो मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल पाए और दे कैन टेक अ बेनिफिट एट द टाइम ऑफ द नीड, राइट. नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत. पहले हम देखते थे कि अभी गुजरात में माँ योजना होती थी, राइट. राजस्थान में भामाशाही कार्ड होता था, तो इट वाज बेस्ड ऑन स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट योजना. नाउ अवर पीएम हैज लॉन्च आयुष्मान भारत, मतलब माँ योजना है वो ट्रांसफर हो गई आयुष्मान भारत में. पूरे सेंट्रलाइज में अब एक ही सिस्टम हो गया पूरे इंडिया में, आयुष्मान भारत. तो वो क्या है, जैसे हमने देखा टैक्स बेस्ड सिस्टम, ये एग्जांपल यही है उसका, कि अपने जो टैक्स पे करते हैं उसी टैक्स से थोड़ा परसेंटेज वो ये योजना में डालते हैं. और जो पर्सन, जो नीड है, जो रूरल पर्सन है जिसकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, वो सारे पर्सन इसके अंदर इंक्लूड आते हैं. उनका कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, उनका डायलिसिस करवाना है, वो सब ये कार्ड के अंदर इन्वॉल्व होता है. तो अपने कंट्री में 70% रूरल है और 30% अर्बन है. पर we all know that in India many of the people who are not under the poverty line also, they also issues this Ayushman Bharat. Why? Because government is giving free insurance cover up to 5 lakhs for total whole family members, right? So people manipulate some their salaries, salary slip and cards and everything, and issues this Ayushman Bharat, right? What is the goal of the this scheme or this yojana? This main aim is to provide a service to create a healthy and capable content New India, and has two goals. It has two goals: creating a network of health and wellness infrastructure all over the country, right? And to provide health insurance coverage to 40%, minimum 40% of the population for secondary and tertiary care, right? It covers pre and post operative hospitalization, pre and post hospitalization charges also. There in this there is no restriction of size and age of the
family and size of the family and age of the person also. The whole costing of the all the payment of the medical treatment will be given on the package rates. There is a fixed package government has prepared for every surgical procedure, and according to that package only the hospital will get the payment, right? It is total cashless and paperless work. Patient visit the hospital, they will consult the doctor. If he has a Ayushman card, there is a alag, different counter over there. Patient will visit over there, show the card. They will make an application in Ayushman Bharat for that patient, and they will receive the approval over the same, and then that patient can be treated, right? Each and every majoritarily every surgical procedure has been covered in Ayushman Bharat. मैंने जैसे बोला कि वो सिर्फ स्मॉल फैमिलीज के लिए थी, उसकी जो अंडर पॉवर्टी लाइन आते थे एज पर गाइडलाइंस वही बोला हुआ है, पर एक्चुअल में क्या है कि सम मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास पीपल आल्सो टेक दिस आयुष्मान भारत कार्ड एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस योजना. अब ये हो गया सेंट्रली. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कार्ड इश्यू कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर जगह जा नहीं पाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है. स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नोडल एजेंसी बनाती है टू इम्प्लीमेंट दिस, राइट? बट पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी. ये जो एजेंसी है, इट विल इम्प्लीमेंट होल स्कीम इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. After this file, patient is discharged and file is received by the state government, it will be transferred to central, and central will do payment to that particular hospital. It implements the scheme through insurance company also. In Gujarat, it is implemented by insurance company only. Oriental insurance company is implementing this scheme, right? Other state, there are other agencies which implement this scheme. It impacts what it impacts. Ayushman Bharat, these schemes will have major impact on reducing out of pocket cost. Poor person afford नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी अमाउंट कि भाई एक नी रिप्लेसमेंट करवाने जाते हो 2 लाख रुपए हो जाते, तो poor person will not afford it. वो वही ऑपरेशन आयुष्मान भारत में करवाता है 80,000 में, in 80,000 only, and that too in a free of cost. That payment will be received by central government to directly to that hospital, right? It nearly cover 40% of the population. All majoritarily secondary and tertiary hospitalization procedures and things are involved in this Ayushman Bharat, and it covers rupees 5 lakh for every family. This there is no restriction on family size and age, right? This includes health insurance policy. Next is medical tourism. Medical, what do you mean by medical tourism? जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है for surgical or medical treatment, right? It is known as medical tourism. It is a process of traveling to a distant location to obtain general medical, dental or cosmetic surgery at a high value than in commonly available in one's own local system. ऐसा भी हो सकता है कि वो उधर अवेलेबिलिटी है, वो सर्जरी होती है वहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो लोग ट्रैवल करते हैं. तो मेडिकल टूरिज्म 2 टाइप में डिवाइड हुए, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. डोमेस्टिक मीन्स ट्रैवलिंग विद देयर इन ओन कंट्री, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, राइट, टू रिसीव एक्सीलेंस ऑफ केयर, राइट. For example, patient of Rajasthan comes to Gujarat for surgical operations, for medical management. Why? Because the facilities, the specialized doctors are not available in Rajasthan, some areas of Rajasthan. It is a domestic medical tourism. What is international medical tourism? It's traveling outside one's country to obtain care at specific reduced rate. अब आप कहीं देखने जाओ यूएस में, यूके में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ यूएस, यूके, कनाडा comes to India
for the medical treatment, for surgical procedures and everything, right? Therefore, the need of the medical tourism is important on international basis also. Why medical tourism is expanding? That's the important point. क्यों एक्सपांड हो रहा है मेडिकल टूरिज्म, क्यों डेवलप हुआ? तो एक अफोर्डेबिलिटी, जैसे मैंने बोला यूएसए यूके में बहुत एक्सपेंसिव हो, तो some people cannot afford the expensive treatment, so they visit another country for the treatment. अवेलेबिलिटी, अब गल्फ, मेनी ऑफ द गल्फ कंट्रीज, वो उसके अंदर बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है. मेनी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, तो दे आर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री फॉर इट. स्पेसिफिकली ओमान, negligible medical facilities are available in it. Accessible, right? Accessible means the treatment facilities are available, surgical procedure are available, but there is a waiting list, long waiting list is there. Especially in UK and Canada, there are more waiting list for surgical procedures, so they visit to another country for the same. Acceptable means in the same location, in the same countries, the service is affordable, available, accessible, but available नहीं है, acceptable नहीं है. Acceptable नहीं है, services cannot be accepted by whatever the reason may be. It may be religious, political, or other social reasons. They will not accept at their own place, so they are traveling for medical purpose. Additional, what is additional? Refer to availability of better care, better technology, better specialty, बेटर सर्विसेज एंड पर्सनलाइज्ड केयर. वहाँ पे ये सब चीजें नहीं अवेलेबल होती, इसलिए वो लोग ये चीज लेने के लिए वो दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. कॉस्ट सेविंग, यस, अकॉर्डिंग टू द यूएस स्टैंडर्ड. अपने यूएस में यूएस कॉस्ट को देख के चले तो इंडिया की सर्विस बहुत चीप रेट में, वो बहुत कॉस्टली है. देयर आर मेनी कंट्रीज, द मोस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन इंडिया. ये जो मैंने डेटास लिखे वो यूएस कॉस्ट के बेसिस पे है. अगर यूएस में वो पर्टिकुलर सर्जरी 1 लाख में हो रही है तो यहाँ पे 70,000 में हो रही है, मतलब 65 to 90% कम रेट में हो रही है यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. ऐसे ही थाईलैंड है, मेक्सिको है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है. तो दैट्स व्हाई मेडिकल टूरिज्म इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. एज अकॉर्डिंग टू द यूएस कॉस्ट, we are having less expensive medical services available with all the specialized equipments and specialized doctors, right? पूरे ग्लोबल में टॉप डेस्टिनेशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म कौन सा है? तो फर्स्ट इज इंडिया, देन थाईलैंड, मेक्सिको, इजराइल, मलेशिया, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. ऑल आर द टॉप डेस्टिनेशन वेयर पेशेंट फॉर द सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट विजिट्स. वो किस लिए विजिट करते हैं? एक तो कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, डेंटिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, कैंसर के लिए हो गया, फिर फर्टिलिटी, आईवीएफ के लिए हो गया, राइट, वेट लॉस हो गया. शुड बी देयर, यस. टॉप स्पेशलिटीज फॉर मेडिकल ट्रैवलर्स: कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटिस्ट्री, कार्डियोवास्कुलर, ऑर्थोपेडिक्स, कैंसर, रिप्रोडक्टिव्स, वेट लॉस, स्कैन टेस्ट, हेल्थ स्क्रीनिंग्स एंड सेकंड ओपिनियंस आल्सो. राइट, इंडिया अब टॉप डेस्टिनेशन पे क्यों है? ऐसे हमने डेटा देखा, अपने लो कॉस्ट है, राइट, अपनी कॉस्ट बहुत कम है, कम तो नहीं बोल सकते बट एवरेजली लो एज पर द यूएस स्टैंडर्ड्स, यूएस कॉस्ट. अब मेडिकल एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, एडवांस इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, देयर इज अ नो वेटिंग टाइम, स्पेशली ट्रीटमेंट इज गिवन टू ईच एंड एवरी पेशेंट्स, राइट. दैट्स व्हाई इंडिया इज बीइंग टॉप डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म. Now, if person is traveling, yes, for medical tourism, there will be a risk exposed due to the medical tourist. First is risk of travel. ऑर्थोपेडिक पेशेंट है, उसको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, लगा हुआ है, वो ज्यादा ट्रैवल करेगा तो उसको दिक्कत भी आ सकती है, राइट. देन रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर. पेशेंट इज कमिंग इंडिया, हैविंग द ऑपरेशन एंड विजिटिंग बैक टू देयर ओन कंट्री, तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर किया हुआ है, स्टिचेस होगा, उसको थोड़ा टाइम स्टिचेस का हुआ होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ट्रैवलिंग. रिस्क दैट माइट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर. अब एटमॉस्फेरिकल चेंज हो गया है, वो रह रहा है कनाडा और यूएस में, वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, यहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर पूरा चेंज होता है,
तो वो भी मेंटल हेल्थ पे पेशेंट की अफेक्ट करेगा, राइट. साइकोलॉजिकल और इमोशनल अटैचमेंट होगा उसको अपने ओन प्लेस से, अपने पर्सन से, फैमिली से, फ्रेंड से, वो दूर हो जाएंगे तो साइकोलॉजिकल और इमोशनली वो डिस्टर्ब होगा, राइट. कोविड-19 पेंडेमिक जैसा कुछ आ गया अक्रॉस द बॉर्डर, तो पेशेंट विल बी स्कैर्ड कि वहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ है. What if I am going for the this procedure over there? I am getting infected. Yes, and there are many more reasons. Right. Then, as I told that India is a top in medical tourism industry. Patients are traveling in India more. So why? We have to make a SWOT analysis in medical tourism industry, in Indian industry. Okay? Strength, weakness, opportunity, and threat. What are the strengths of our market? What are the weakness of our market? What are the opportunities to develop our market? And what are the threats of our market? Right. अपनी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे आपने बोला वी आर गिविंग एट लो कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस इक्विपमेंट्स, वेटिंग टाइम नहीं है अपना, स्पेशली ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, दैट ऑल आर आवर स्ट्रेंथ, राइट. Then what our weakness? Weakness that we are not, all our hospitals are not accredited by the international standards or the national standards, right? Unhygienic country as per the perception of the customer. बहुत जगह थोड़ी बहुत इतना हाइजीन नहीं रहता है, इसलिए अनहाइजीनिक कंट्री हो जाता है. मतलब कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं होता है किसके साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, होटल्स के साथ, ट्रैवल एजेंट के, क्योंकि एक पर्सन इज विजिटिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, they will require hotels, they will require travel guard, they will require airline person who can coordinate with hospital, should coordinate with all these agencies. So there is a low coordination among all these various service providers. Main purpose is government ka support. We don't have the strong government support to promote the medical tourism from the government, right? अपॉर्चुनिटीज क्या है, जैसे बोला कि यूएस और यूके में प्राइस हाई है तो पेशेंट्स दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, दैट्स आवर अपॉर्चुनिटी कि भाई दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, पहले इंडिया में ऐसे हमको मार्केटिंग करनी चाहिए, राइट. डेफिशिएंसी ऑफ सप्लाई इन नेशनल हेल्थ स्कीम इन कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, डिमांड फ्रॉम कंट्रीज विच अंडर डेवलप्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डिमांड फॉर रिटायरमेंट होम्स फॉर एल्डर पीपल, स्पेशली जापानीज. अब पर्सन आ जाते हैं पर अपनी इंश्योरेंस कंपनीज में ऐसी क्राइटेरिया नहीं है जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस को सपोर्ट करे, जो क्लेम करे. सो इट इज मेन लूपहोल. सो इट्स आवर अपॉर्चुनिटी कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी की गाइडलाइंस और वो पॉलिसी अपने में एक्सेप्ट हो जाए, तो इट्स आवर अपॉर्चुनिटी दैट पेशेंट विल कम, the flow of the patient will increase in India for medical tourism. And threats, क्या threat है, अपना दिक्कत क्या है, strong and tough competition from Thailand and Singapore. थाईलैंड एंड सिंगापुर में भी सर्विस अच्छी है, मेडिकल टूरिज्म अच्छा है, मेडिकल सर्विसेज अच्छी है, तो अपना कंपटीशन है उसमें. लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, यस, अपने पास इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है, उसकी कमी है. लो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अभी तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बन रही है, अपोलो गिनो, जाइडस गिनो, केडी गिनो, राइट, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है. फिर गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इतना हेल्थ केयर के अंदर नहीं होता. जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट इम्प्रेसिव. फॉरेन कंट्रीज में अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो वो बहुत अच्छा होगा, तो वो एक अपनी लिमिटेशन रह जाएगी, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सो वी हैव टू फोकस इन द infrastructure part also. That will be the future of the hospital. We will study later on, right? This is SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat in medical tourism, right? Then we comes to contracting in healthcare, right? This sector has emerged nowadays very much. What is contracting? Contract management is a general concept that may encompass a wide range of operation, strategic, and administrative components. This variation may include difference in management goals, array of services provided, specialty emphasis, depth of management experience, and centralization of decision making in management organization.
अब कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप की, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एंड आउटसोर्सिंग। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या होती है, अभी वी कैन से दैट आवर एसवीपी हॉस्पिटल इज डेवलप्ड, राइट, इट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट्स 1600 बेडेड हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल को बनाया भी किसी और ने, ठीक है, वो ऑपरेट भी कोई और कर रहे हैं, स्टाफ भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ठीक। तो इट्स ऑल कम्स ऑन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। वो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक हॉस्पिटल है, एसवीपी हॉस्पिटल है, उसने प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है फॉर ऑल दिस पर्पसेस, फॉर ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, राइट। उसका बेनिफिट क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग का, तो person, the hospital person or the government segment can focus more on that main operations of the hospital. एसपीपी हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ने आर्किमेडिस कंपनी इज डीलिंग इन आर्किटेक्चर, हेल्थ केयर आर्किटेक्चर ओनली। उन्होंने डिजाइन उन्होंने किया हुआ है, अभी ऑपरेशंस वो देख रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन वो बना रहे हैं। उन्होंने दूसरी 2-3 कंपनियों को आउटसोर्सिंग दिया हुआ है, कंपनीज को हायर किया हुआ है, जो एक नर्सिंग सप्लाई, नर्सिंग स्टाफ सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, कोई हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने थर्ड पार्टी को भी हायर किया हुआ उसी जगह से। अब ये रोल क्या आएगा, जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट एजेंसी है, वो प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट देती है, किस लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फॉर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द हॉस्पिटल्स, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, मतलब ये टू क्रिएट मैंडेटरी थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। इसमें तो अपने एसवीपी में क्या है कि गवर्नमेंट फंडिंग है, तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है इसमें। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, IT department also is also given on the outsourcing basis, right? Materials management, the development of maintenance and supply chain management, availability of serviceable equipments and appliances are all outsourced, right? तो देखना क्या है, हमें अपने ये काम के लिए अपने पार्टनरशिप तो कर दी, पर इट शुड बी there should be a transparency in selecting, designing, costing, awarding contract in any individual और एजेंसी। जो भी एजेंसी और इंडिविजुअल को आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, it should all be clearly mentioned in the MOU or partnership documents, right? This PPP, right, is public private partnership, is work as a social responsibility of the public sector। पब्लिक सेक्टर को उसको डुबाना नहीं है, उसको ऊपर लाना है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को वर्क दे रहे हैं कि अच्छे से वेल मैनेज्ड वर्क हो। दे पब्लिक सेक्टर शुड आल्सो नोट दैट देयर शुड बी रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मनी। वो जो भी हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो उसको रिवर्ट मिलना चाहिए, उसका वो भी उसको देखना पड़ेगा, राइट। इसमें गवर्नमेंट आल्सो केम इन अ रोल। हाउ government supports in infrastructure setup, especially in land acquisition or providing space। इतना 1600 बेड्स का हॉस्पिटल बन रहा है, 2000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, तो इट विल रिक्वायर अ बिग लैंड, राइट। तो गवर्नमेंट सपोर्ट्स इन सेटिंग अप एंड एक्वायरिंग दैट लैंड टू द पर्टिकुलर एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। It also offers capital or revenue grant to the sector to develop the hospital infrastructure and its management। There will be budgeting provisions for capital and operating expenses. It formulates the health sector specifically policies and guidelines for PPP, private public partnership करे तो उसकी policies and guidelines भी government ने issue की हुई है, right? Capacity building within government for managing PPP projects also, right? And these are some roles of the government which ensures that the PPP, public private partnership, works in a smooth way, right? Another is outsourcing। अब ज्यादातर मिड साइज हॉस्पिटल होती है, 50 बेड्स, 30 बेड्स, 100 बेड्स अराउंड, राइट। वो लोग क्या करते हैं कि वो सारी डिपार्टमेंट्स इन हाउस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या फिर मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं होती है,
या फिर इतनी नॉलेजेबल नहीं होते वो डिपार्टमेंट में, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो लोग आउटसोर्स करते हैं एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर से। तो कौन से डिपार्टमेंट वो लोग आउटसोर्स करते हैं, तो सिक्योरिटी हो गया, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, फूड सर्विसेज, सिविल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, फार्मेसी, ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन, अदर ट्रांसपोर्टेशन, राइट, laboratory service, radiology, blood bank, biomedical engineer, IT, marketing, HR. There are many other areas which can be outsourced by the hospital according to their needs and availability of resources, right? अब उसमें देखना क्या पड़ता है कि वो अगर आउटसोर्स किया है तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होंगे। तो वो पहले होगा कॉस्ट सेविंग। अगर आप लेबोरेटरी इन हाउस ही कर रहे हो तो वो कितनी सारी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगा, एक तो कॉस्ट सेविंग हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आपको लेबोरेटरी आपको पता ही नहीं है कैसे वर्क हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सेटअप कर दिया, वो वर्किंग ही ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए आप आउटसोर्स कर दो। अगर आउटसोर्स कर दो वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसके अंदर, ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पेशेंट विल बी सेटिस्फाइड, फोकस ऑन the hospital person, the directors or the managers or the CEOs can focus in on the core business। अपने पास लैक ऑफ पर्सन है इसलिए अपने आउटसोर्स कर रहे हैं, फंड्स अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए आउटसोर्स कर रहे हैं, राइट। आउटसोर्स किया उसका बेनिफिट भी आ जाते हैं, वो कस्टमर पेशेंट सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल, जो भी सर्विस हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है वो क्वालिटी सर्विस होगी, क्योंकि जो स्पेशलाइज नहीं है उन्होंने आउटसोर्स करके रखा हुआ। कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको अंदर डालनी नहीं पड़ती, राइट। बेनिफिट्स सारे इम्प्रूवमेंट्स इन सर्विस क्वालिटी लेवल्स हो गया। आपने लेबोरेटरी या रेडियोलॉजी सब आउटसोर्स किया तो उसकी प्लेस आप यूज कर रहे हो, राइट, यूज ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। रिस्क भी शेयर हो गया कि अगर फार्मेसी ना उसने अपने आउटसोर्स रखी हुई है तो उसकी इन्वेंट्रीज लानी है, मंथली अगर लॉस गया तो आपका जो रिस्क शेयरिंग है वो डिवाइड हो जाएगा उसके अंदर, राइट। अब ये सब आउटसोर्सिंग, ये पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, अगर नहीं होती क्या होता है, there will be a lack of coordination and integration between the healthcare organization and external providers who is providing the services। understandability नहीं होगा, ठीक है, तो it will not give you perfect result। sometimes employees resist to change, like nursing अपनी इन हाउस ली हुई है, we are not getting a good quality of nursing staff, so we are outsourcing। तो जो current employees है वो resist करेंगे, भाई हमको ये change नहीं करना है, we do not accept this change, right। it will be difficult at the time of price negotiation and billings problem also, when they will keep a bill there will be a discussion over there also, right। Next is it's contracting in healthcare, two types, private public partnership and outsourcing, right। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल। अब फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल क्या होना चाहिए, आपने देख ही रहे सब ऑटोमेटिक हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी से लेस है, तो अब फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल भी वही है। वो उसकी बिल्डिंग्स जो बनेगी ग्रीन, इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ ग्रीन हॉस्पिटल, सस्टेनेबल हॉस्पिटल, सस्टेनेबल बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स, राइट। तो वो क्या है, इट्स अ बिल्डिंग दैट यूजेस बोथ टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसेस टू क्रिएट अ फैसिलिटी दैट इज सेफ, healthy and comfortable and enables productivities and well-being for its occupants, right। अब उसने फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स लगा दी, अपना इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल विल बी सेव्ड, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, अब वी आर keeping a bore facilities so that we can pull out the water from the soil। if there is a rainwater harvesting, the water of the rain will be directly go into soil and we can have a benefit of it। So this all things nowadays hospital is processing and starting in its regular process of while they are building the hospitals, right। And there are important things which we have to take into consideration while building the hospitals or building the any healthcare buildings, right। First of all, site selection, वो NOC होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए,
सॉइल कैसी है, वो इतना अपने 5 माले या 7 माले की हॉस्पिटल बना रहे तो सॉइल पे टिकेगी नहीं टिकेगी, उसका डिजाइन should be attractive design, construction should be effective, its operation and maintenance should be built in a such a way that the after building is prepared, its maintenance can be done in a smooth way, its renovation can be done, and it can be demolished easy, right? अब ये जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो लीड है, लीड क्या है कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, LEED लीड स्टैंडर्ड्स बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है बिल्डिंग्स को डिजाइन करने के लिए, ऑपरेटिंग के लिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो लीड फिर क्या करेगा कि वो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को रेट्स भी करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस प्लेटिनियम रेटिंग, गोल्ड रेटिंग, सिल्वर रेटिंग, आफ्टर इट्स असेसमेंट वो एक बिल्डिंग को असेस करने आएगा, फिर उसको रेटिंग देगा, भाई ये प्लेटिनियम रेटिंग होगा, गोल्ड रेटिंग होगा या फिर सिल्वर रेटिंग होगा। अब हम ये जो बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, अपने इतना सारा टेक्नोलॉजी यूज किया, इतना साइट सिलेक्शन किया, ये रिनोवेशन का भी ध्यान रखा, बाद में मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा, तो इन सब में से अपना बेनिफिट्स को क्या होगा, इट विल बी लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अपने सब ध्यान रखा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डे टू डे जो मेंटेनेंस है वो लोएस्ट हो जाएगा, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी देयर, ग्रेटर टेनेंट अट्रैक्शन हो जाएगा, पेशेंट्स आ रहे हैं उनको एक अट्रैक्टिव लुक मिल जाएगा, एनहांस मार्केटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स, रिड्यूस लायबिलिटी एंड रिस्क, हेल्थियर प्लेस टू लिव एंड वर्क। स्टाफ का भी देखना पड़ेगा, स्टाफ को भी काम करना अच्छा लगना चाहिए, प्लेस अच्छी हो तो। फ्यूचर प्रूफ असेट्स, फ्यूचर प्रूफ असेट्स का क्या होता है कि भाई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग उसको रेजिस्ट करनी चाहिए, राइट। कॉम्पिटिटिव एडवांसेस, उसका क्या होता है, वो एक अपने हॉस्पिटल, इट विल कीप योर हॉस्पिटल इन अ सुपीरियर बिजनेस पोजीशन, अट्रैक्टिव होगा तो अपना लुक बढ़ेगा, वो अपनी बिजनेस के लिए भी सुपीरियर पोजीशन में अपने आ जाए कि भाई हाँ वो अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो अपने एक बार पेशेंट अट्रैक्ट तो 100% होगा, तो पहले लेट्स सी एंड हैव अ लुक ओवर देयर, राइट। उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा कि अब अभी सर्विस अपने देख ही रहे कि भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब यूज कर ही रहे हैं, इंटरनेट्स आ गया, मोबाइल फोन्स आ गया एंड एवरीथिंग आ गया, जो टेलीमेडिसिन में हमने देखा है, राइट। तो नेक्स्ट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर हॉस्पिटल, ई हेल्थ एंड एम हेल्थ। ई हेल्थ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ गया जो यूज होगा अपने डेटा, मेडिकल इमेजेस, मेडिकल डेटा ट्रांसफर के लिए। द टर्म ई हेल्थ could be described as the use of ICT in hospitals. Right? E-health is defined as the use of ICT in provision of healthcare services. This means ICT can be used in various healthcare functions such as clinical, education, research, administrative, regardless the geographical settings. आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो, आपको क्लिनिकली गाइडलाइन मिल सकती है, एजुकेशन मिल सकता है, रिसर्च कर सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस मिल सकती है, सारा डेटा ऑनलाइन है, कोई कहीं पे भी बैठ के वो डेटा ऑपरेट कर सकता है, देख सकता है, स्टडी कर सकता है, राइट। मोबाइल एम हेल्थ मींस मोबाइल हेल्थ, सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए, राइट। तो क्या मोबाइल हेल्थ, एम हेल्थ एक्सटेंड्स टू एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑलरेडी अवेलेबल हेल्थ सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज PDAs and mobile telephones network to improve functions of the health system। मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गए हैं, डॉक्टर्स कहीं पे भी बैठे हो पेशेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि भाई उसको मेडिसिन गई कि नहीं, कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है उसकी, नर्सिंग का वाइटल्स किया हुआ तो वाइटल्स क्या क्या पेशेंट का है, कुछ अपडेट करना है कि नहीं करना है, ऑनलाइन ही डॉक्टर सब अपडेट कर सकते हैं। देन if there is a e-health, there will be some challenging, there will be some difficulties also in providing e and m health also. There is a lack of skilled workers. जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, कैन नॉट यूज दी टेक्नोलॉजी प्रॉपरली, राइट। देन टेक्निकल एंड ऑपरेशनल challenge will be there, lack of proper framework, needing suitable medical equipment, वो इक्विपमेंट मूवेबल नहीं है, कहीं ले नहीं जा सकते, ठीक है।
फिर कई बार ऐसा होता है सब ऑनलाइन है, कुछ करप्ट हो गया तो सारे मेडिकल रिकॉर्ड सब डिलीट हो गए, राइट। वो पूरी सिस्टम जो अपने डेवलप की है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली मूवेबल, वो सब उसका मेंटेनेंस, उसका अपडेशन, वो सब रेगुलर पे होना चाहिए, वो एक चैलेंज हो गया। फिर सोशल एंड कल्चर, अपने जब कंसल्टिंग टेली कंसल्टिंग करते हैं तो वो एक बड़ा सोशल एंड कल्चर लिमिटेशंस अपनी आती है। कई उनको एजुकेशन नहीं होता है इतना कि भाई ये ई हेल्थ है, कैसे वर्क करेगा, क्या है क्या नहीं। कल्चरल लिमिटेशन आ जाती है एग्जीक्यूटिंग वाइल एग्जीक्यूटिंग द ई हेल्थ। सम patients or some class or some rural person resist to for the change due to their habits कि भाई ये कैसे अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, ये कैसे वर्क होगा, उनको कैसे पता चलेगा, वो देखते ही नहीं। फिर there are some legal compliances also, legal challenges also, lack of proper government laws, इतने अपने गवर्नमेंट के लॉज इतने नहीं है जो डायरेक्ट आईसीटी के लिए अप्रूव हो। नो सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, कोई ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है। लैक ऑफ एक्सिस्टिंग सुटेबल लॉज फॉर पर्सनल राइट्स एंड कीपिंग पेशेंट्स प्राइवेट सराउंडिंग्स, वो एक चैलेंजिंग आ जाती है। फाइनेंशियल्स, तो भाई नीड ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी हाई इन इलेक्ट्रिक हेल्थ फील्ड्स, इट्स increases the healthcare cost, right? These are the challenges of ELML. And now digital hospital, as I have said, digital hospital is fully of technologies, medical devices, smart information system, facility control and automatic system, location sensor will be there, digital communication will be there, everything will be digital. Patient will get their treatments digitally signed, e-prescription by the doctors directly to their mail IDs. Total paperless work will be there. This is digital hospitals. Some of the departments has been converted as digital in the hospital currently, but whole hospital is not covered digitally in today's time, right? But maybe in future the whole hospital working of the hospital can be digitalized, right? Next is electronic health records. जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, करंटली वी आर यूजिंग अ एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, तो उसमें रिसेप्शन स्टाफ एडमिशन करता है पेशेंट का, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ वो डेली का डेली ट्रीटमेंट डालेंगे कि भाई ये हुआ है, उसका रिपोर्ट आएंगे तो रिपोर्ट्स डालेंगे कि रिपोर्ट का आउटकम क्या हुआ है। कंसल्टेंट जो भी विजिट के लिए आएगा तो कंसल्टेंट उसके अंदर अपडेट करेगा कि भाई एट द टाइम ऑफ द विजिट कंप्लेंट्स ये रही, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सब कुछ अंदर होगा। तो वो हेल्थ वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक उसका रिकॉर्ड जनरेट हो गया, राइट। पर इन मैनी हॉस्पिटल्स मैनुअल रिकॉर्ड्स आर जनरेटेड, तो उसका क्या होता है, देयर आर सम एजेंसीज सच एज पर्पल डॉग, they come to your place, they take your physical records with them, they scan all the records and keep in their records, and as and when you require they will provide you the particular patient's record. So each and every health record is now electronically, all data will be generated electronically and you will receive the data as and when you will require for any patients or anything else. Now we will discuss the opportunities in healthcare management. You are all doing masters in hospital administration or MBA in hospital management, right? So what after completing these courses, what are the opportunities in healthcare management services? There are wide opportunity in our hospital. After COVID, many hospitals has been set up in Gujarat and out of Gujarat also. Then it has been you have to decide that you have to go in which field, admin line, quality line, operations. After admin you will go in operations field, but it's a quality purpose, backend, या फिर marketing, HR, it will all will be covered in operations. I am in a group which where all the opportunities, all the vacancies of the hospitals came in it all over the India. सारी अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबिलिटी है वैकेंसी, जिसको कोई पर्सन रिक्वायर्ड है, फ्रेशर, एक्सपीरियंस पर्सन, they kept in a group so that we are a group of around 200 or 210 people.
तो जिसको भी जो रिक्वायर, बिजनेस हेड हो गया, मार्केटिंग असिस्टेंट मैनेजर जो भी है, तो वो लोग ग्रुप में डालते हैं। और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। आउटसाइड इंडिया अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है। क्यों? फॉरेन कंट्रीज के अंदर, स्पेशली नाउअडेज इन ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, यूके, वो चार कंट्रीज के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग स्टाफ, वो दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। स्टाफ अवेलेबिलिटी यहाँ पे, पॉपुलेशन जो भी अदर स्टेट, अदर कंट्रीज से वो लोग सब वापस चले गए, तो अभी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, right? And if you want any vacancy or want to work with any hospital, please contact me. I will let you know, right? Next, any questions, sir? Any questions, guys? Um, anyone ask any question from? Yes, sir. You can proceed. Thank you, yes, sir. It was a Thank you. wonderful session by your side. We are Thank you. really delighted to have you on this platform and the kind of interesting insights that you have delivered on the various aspects of futures of healthcare and recent advances in healthcare management. That is excellent. And on the various topics that you discussed in healthcare, that is telemedicine, health insurance, medical tourism, and the future of the hospitals in India, the kind of elaborate illustrations that you have given, that was really exemplary. And definitely, I think that our students as well as the viewers who have joined this session would really have got benefited by it. And definitely, I'm really again, I'm very much thankful to you for coming on this platform and giving your insights. So thank you, sir. Thank you for coming, joining us. Thank you. Thank you very much, sir.
सर को YouTube बंद करने के जा रहे हैं क्या? ऐसा बोलना पड़ेगा YouTube बंद करने के लिए? हम्म? यार फोन नहीं उठाते। हेलो। તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી રહ્યા છો તે જવાબ નથી આપી રહ્યા. કૃપા કરી થોડા સમય પછી પ્રયાસ કરો. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रहे हैं. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास. अपने यहाँ से सर बंद करेगा नहीं होता कोई ऑप्शन? स्ट्रीमिंग हम भी तो बंद कर सकते हैं ना।